All right. So we were studying about fine tuning of large language models. Well, as we know, large language models do already have knowledge about text. Now, as we have seen in ChatGPT, it can also process images. So, LLMs now do have knowledge about different types of data. Fine. It can be of any form because they have been trained on such kind of data to interpret, to analyze them and produce the result. However, the result which we are expecting here is in the form of text because it's a language model. Okay. And in language we are currently consideration is with text generation. Okay. So they are very well trained over huge amount of data in any form. The architecture which we have learned for transformer, that comprises of, you gave data as an input, we do have encoder, we do have decoder, and from decoder we get the output. So decoder is responsible. In GPT, this one is responsible for producing the output. Okay. Now the point is, there are so many layers present in the architecture. That's what we have seen. If I do consider only decoder, so decoder comprises of attention mechanism, and there are two attention mechanisms. One is masked multi-head attention, another is just simple multi-head attention. Apart from that, we are having residual network, feed forward network. Okay, feed forward network. Fine. Now you are talking about, sir, I need to fine tune my model. Okay. So LLM is a huge model, and there are so many parameters. You very well know that LLMs are trained on millions and billions of parameters. Parameters means weight and the bias. Ultimately, the common understanding says that you are having a neural network. As I already told you, that encoder decoder is a neural network only. Fine. And you know the entire process how we deal with the data inside the network. So there will be so many layers, there will be so many neurons, and it's already told billions of parameters. Okay. In that particular case, if I want to use LLM for my task, therefore,
You have to fine tune it. Fine tuning is what I explained in the previous class also. Changes to be done in parameters. See, that's what we do have in machine learning also, in deep learning also, in generative AI also. We call learning as parameter values only. If you do talk about linear regression, equation is beta naught plus beta x. And the learning in linear regression means you have to find the optimal values of beta naught and beta 1. And beta naught and beta 1 are the parameters. So ultimately, whether you are in machine learning, whether you are in deep learning, whether you are in generative AI, learning means parameter. You have to find the optimal value of parameter. Optimization. That's what you have to do. So now the question with me is, you are available with a huge model. What you want to do in fine tuning? Do you want to change the parameter values for entire model? Do you want to give your data to the LLM as we do in machine learning, as we do in deep learning? As same, do you want to give the data to the LLM and train this model with it entirely, or there is a plan that no requirement of entire training of the model, instead we can train the outer layers, train outer layer which produce the output, which produce output. So that will be easier rather than performing the training of entire model. So outer layers will be feed forward layers. The mechanism which LLM do perform internally, I don't want to do the change in that. Let it be. Outer layer will be the neural network, the feed forward layers, and will give our data and will perform the training. That means we will adjust the weight according to our data. That's what we will do, and we'll get the output. This is fine tuning. That means instead of training the entire model, we can train few layers in the model. However, entire model training is also fine tuning with your data. I'm not denying that. Okay, but that's a complicated task. Why? Because you need that much resources to perform it. We should have that knowledge to entirely change the weights of the model from initial layer to the final layer. So the fine tuning which we do perform is for downstream task
For example, okay, you want to do text classification. So it's not like you have to entirely change the model weights. No, that's not required. For this task, such kind of task not required. Just only change the output layer neurons, weights, and that's it. Okay. There are different types of fine tuning, and we want to know about them. Okay. So let me share my entire screen and discuss about these fine tuning techniques. Okay. The basic idea I have told you. So fine tuning of LLMs, we say in current world, what we are seeing, entire work is being done on large language models. If you are being as a part of AI, the entire work for AI is being set up to, okay, create some such models which can define the task in an easy way, automation by this chatbots. One of which it requires is fine tuning. Okay, so here the vision and the scope of LLMs are mentioned. LLM will be more a universal tool. I already told no? The entire work of AI is based upon this LLM. Every big company, organization is working on LLM. Okay. So the objective is to make such kind of models which can simplify the task, which can produce the output. And these points define a common approach which we do perform in machine learning, deep learning everywhere. Model selection, model training, model evaluation, model deployment. These are the basic tasks. These tasks can also be applied on LLM. Okay. Now the question stands, what is fine tuning? It is the process of taking pre-trained model. Okay. Pre-trained means the entire architecture comprising of layers and the neurons have weights, tuned weights. That is pre-trained. Pre-trained means the weights, the values assigned to the neurons is available. We want to train it for smaller. So downstream task means a smaller task. As I told you, text classification is a small task. We want to refine the capability of LLM. To classify the text, to refine the capability. That means we want to use the LLM for general purpose. Just like, okay, we use machine learning also for text classification, deep learning also for text classification. We do have NLP models available for text classification. Similarly, we are going to use LLM for text classification. We want to check how does this thing is being performed by a huge model. Okay, so now
Fine tuning is about turning general purpose models and turning them into specialized models, specialized, okay, specific application, specific task. I want to turn up. I want to turn the knowledge into specific domain. Okay, LLM is knowledgeable, already having text trained. I want to convert it into specific domain of text classification, sentiment analysis, fake news classification, sarcasm detection. I can do anything. Okay. So you can use any LLM like GPT-2. Okay, we can start from BERT also. BERT and the cousins of BERT can be used. Okay, GPT-2, GPT-3, GPT 3.5 or 4. I'm not denying anything. You can take any Gemma, Llama. You can take anything to perform the fine tuning. You can take any data from your side and perform the fine tuning. Okay, am I audible? Can you hear me? Yes, sir. Okay, fine. So we can use the LLMs for such kind of task. Okay, and that will be specific in nature. The task is not so much complicated. However, we can use the utility of LLM. In context learning, zero shot inference, we can use fine tuning. In context learning means it is a method of improving the prompt through specific task example within the prompt, offering LLM a blueprint of what it needs to accomplish. This is prompting with example. Prompting with example. That means you can write a prompt and give an example in the prompt that, okay, kindly perform a task like this. So LLM will offer a work according to it. You can assign a role to LLM and then you can make it to perform the task accordingly. The next one is zero shot inference. Okay, that incorporates your input data in the prompt without extra examples in zero shot. Doesn't yields the desired result. One shot or few shot can be used in case if zero shot doesn't give you the answer. So we do have shots, one shot, like few shots, something like that. Okay, uh, if zero shot, what does this zero shot means? Zero shot. This is all prompting. One shot, few shot, chain of thoughts. What these means? See, we are making LLM to understand. Okay, one shot, like, okay, you are giving a prompt to it. Few shot, that means you are giving multiple prompts to it. Chain of thoughts, that means you are in continuation with the LLM conversation to improve your result. That is chain of thought.
To improve, you are in continuous conversation with the LLM for refinement of the output which LLM give. So that is chain of thought. So you can give one prompt, you can give multiple prompts, you can give multiple prompts, but in conversation like such a manner that you are making LLM to refine the output. Okay. So here also fine tuning has been used. These techniques use directly the user prompt. Okay, so right now it's all about prompting. This is about prompting, making or desiring LLM to work according to our needs. So just refinement in the prompt. That's what it's called as prompt engineering. Now, what is next for us? Supervised fine tuning. That means I am going to use LLM and I am available with labeled data. That's what we just discussed recently. If I need to perform text classification, this is my labeled data. I am available with LLM. It can be anything like GPT 3.5, or it can be Gemma or Llama, whatever. So I will perform training of the model as usually I do. Fine. So here, initial training of the language model is unsupervised. However, now if you do take your data, then it will be supervised, because you are taking a data which is already having a target. So the meaning of this supervised fine tuning is, as per our previous discussions, LLMs do take data that is large amount collected from various sources and fed into the LLM just to make aware LLM about terms. Okay, here only, here only you do perform masking, you do perform next sentence prediction during training only. Such kind of feeding data to the LLM without any target. I don't have any target here. I am just available with data I collected from various sources. I turn up that data into a particular file. You can say it's a notepad. Okay, I can turn up the data into this notepad file. I can in any format, and I give this data to the LLM for the training purpose. So if I don't have any target, that is unsupervised. Okay, that is unsupervised. Okay, now it is saying that for fine tuning, you do perform supervised. That means your models is already having knowledge of text. I can tune it for my specific task. That is supervised. That means take a labeled data of text classification, maybe like this is text, this is label. So you can have some statements, this can be a label for it, and you can feed this data to the LLM, and it can be trained for this downstream task, specific task. Later on you can give a sentence to this LLM, it will give you the output as whatever be the label is. That's it. So here in the statement they told, and I already explained you about it, the model is trained on unsupervised. Initial training is unsupervised. But you are using this to perform fine tuning.
because your data is having a target, so it is supervised now. Okay, so let's get into more detail about the fine tuning. Though we have an idea about it, let's have more details. For preparing the training data, there may be many open source data sets, okay, which are having the text and the label. I can take any of the data, product reviews, sentiment reviews, Amazon, I can take any data. Okay, and once your instruction data is ready with the standard supervised learning, you can divide the data into training, testing, validation. That's what you can do. And you can train your data and validate your data during training only. That's what we can perform. And we will be doing a project also on this. Okay, fine. So during fine tuning, model is exposed to labeled data. That's what we said above, ना, it's supervised. तो ये काम तो हम पहले से ही करते आ रहे हैं ना, मशीन लर्निंग चाहे डीप लर्निंग के साथ तो वही कर रहा है. और अल्टीमेटली what has been done here is we can adjust the weights. So not for the entire model we are adjusting the weight, we are just adjusting the weight for few layers. ये हम काम कर रहे हैं यहाँ पर. ओके, वेट एडजस्टमेंट, तो फाइन ट्यूनिंग का मतलब ही यही है, वेट एडजस्टमेंट, दैट इज ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेस. और वो भी ग्रेडियंट डिसेंट से तो परफॉर्म होती है. ऑप्टिमाइजेशन इज ग्रेडियंट डिसेंट ओनली. यू वेरी वेल नो द बेसिक फॉर्मूला फॉर वेट ऑप्टिमाइजेशन. जानते हैं आप, डब्ल्यू डैश इज इक्वल टू डब्ल्यू माइनस अल्फा डेल एल बाय डेल डब्ल्यू. ये हमें करना है फॉर द न्यूरॉन्स विच आर प्रेजेंट इन द लेयर. आउटर लेयर्स पे जो हैं, इसकी वेट एडजस्ट करना है. मैं अपने डेटा से, विद माई डेटा आई वॉन्ट टू डू दैट. ओके, यस, एनी डाउट प्लीज लेट मी नो. आप यदि कुछ पूछना चाह रहे हैं तो यू कैन टेल अबाउट इट. ओके, लेट मी रिकनेक्ट टू माई वाईफाई. ओके, एम आई ऑडिबल नाउ प्रॉपरली? यस. Yes, sir. हाँ, ठीक है. नाउ एनी डाउट प्लीज लेट मी नो. वट एवर आई टॉट ना, दैट्स मैंशनड हियर, एवरीथिंग. एंड जो ट्रेनिंग है वो मल्टीपल इटीरेशन ईपोस पर होगा, ज़्यादा भी नहीं लेते. वॉट एवर आई नो इस हार्डली 3 ईपोस तक आप डेटा को चला दो बस. हार्डली 3 ईपोस. अच्छा, एक बात और है. आपके दिमाग में बात आ रही होगी ये कि सर एलएलएम तो लार्ज मॉडल है, एंड लार्ज मॉडल है तो सर वैसे ही उसको नॉलेज है टेक्स्ट का. ओके, तो आप यदि अपना डेटा यू 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 टेक, जो कि लेबल्ड डेटा है, उसको लेकर चलोगे और ट्रेन करोगे ऐसे मॉडल को, तो सर वो तो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो 99 टू 100% एक्यूरेसी हो जाएगी. आप ऐसा, दैट्स व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग. बट लेट मी टेल यू फ्रैंकली कि मैंने देखा नहीं है अपना जो भी ट्रेनिंग विच आई परफॉर्म ना, इतना एक्यूरेसी तो एलएलएम नहीं आपको. लोअर मॉडल्स दे सकते हैं. ओके, मशीन लर्निंग मॉडल कैन गिव यू सच काइंड ऑफ एक्यूरेसी, डीप लर्निंग मॉडल कैन गिव यू सच काइंड ऑफ एक्यूरेसी, लेकिन एलएलएम में इतना एक्यूरेसी मैंने डाउनस्ट्रीम टास्क के लिए तो नहीं देखा. लेकिन हमें ऐसा लगता है कि आप हैवी मॉडल यूज कर रहे हो ना, हैवी मॉडल, तो हैवी मॉडल तो सर और ज़्यादा जानता है, नॉलेज है उसके पास, तो आपकी डाउनस्ट्रीम टास्क तो वो यूं निपटा देगा, आप उसको ट्यून कर रहे हो तो. देखिए, इतना मैं आपसे कहूं कि डाउनस्ट्रीम टास्क को करने के लिए, ट्यूनिंग करने के लिए भी इट टेक्स टाइम. ठीक है, जैसा भी मैंने कहा कि एलएलएम का हम आउटर लेयर्स को यूज़ करेंगे फॉर ट्रेनिंग पर्पस. ठीक है, पूरा तो नहीं कर रहे, नहीं तो बहुत टाइम लग जाएगा और ये सेंस नहीं बनता. ओके, तो जो ईपोज है हार्डली 2 या 3 तक, उसमें भी ज़्यादा नहीं लग रहा. 2 to 3 ईपोज तक आप चलाइए एंड यू विल गेट द एक्यूरेसी लाइक, ओके, क्योंकि 2 to 3 ईपोज तक ही आई थिंक 75
580% तक का एक्यूरेसी हम अचीव कर सकते हैं। ये कुछ प्रैक्टिकल है जो व्हाट आई डिड, एंड देन आई स्टॉप। फिर मैंने कहा कि ये बस इतना हो गया है। एंड क्योंकि एलएलएम है, यदि वो इतनी ही कह रहा है तो भाई वो ठोस कह रहा है। इस बात पर आप अमल करिए। मशीन लर्निंग मॉडल यदि मेरे को 99% एक्यूरेसी भी बोल देना तो मेरे को डाउट हो जाएगा उस पर। ओके, लेकिन एलएलएम यदि 80% भी बोल देना तो मैं खुश हो जाऊंगा उस पर। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि एलएलएम एक कॉम्प्लेक्स आर्किटेक्चर और उसका जो टास्क है वो कंटेक्स्ट अंडरस्टैंडिंग को लेकर खास बनाया गया है। रिलेशनशिप बिटवीन द वर्ड्स, मैकेनिज्म उसका स्ट्रांग है। तो यदि वो 80% भी बोल रहा है तो मतलब वो इतना तो करके ही दिखाएगा। लेकिन मशीन लर्निंग या सिंपल आप डीप लर्निंग मॉडल्स 99% भी बोलते तो मेरे को डाउट है उस पर कि वो दे दें। तो आई थिंक इतना इनफ है और आप यू कैन परफॉर्म योर टास्क। ठीक है। अब यहाँ बोल रहे हैं मॉडल अपडेट हो गया और उसने सब कुछ कर दिया काम। हम कोड भी देखेंगे आगे, लेकिन आपको एक आइडिया तो दे दूँ। So if we ask a pre-trained model why sky is blue, it might reply because of the way the atmosphere scatters the sunlight. This answer is simple and direct. However, the answer might be too brief for a chatbot for a science educational platform. It may need more scientific detail and context based on your guidelines. So, this is where the supervised fine tuning helps. That means after fine tuning, the model can give more in depth response to scientific questions. अच्छा, ऐसा भी क्या है? देखिए, आपको ऐसा नहीं है कि सिर्फ टेक्स्ट क्लासिफिकेशन के लिए ही आप जो है उसको यूज कर रहे हैं। नहीं, आप एक काम करिए, यू टेक अ डेटा ऑफ क्वेश्चन आंसर, जस्ट टेक अ डेटा ऑफ क्वेश्चन आंसर ले लीजिए और इस पर भी ट्रेन कर सकते हैं आप। फॉर एग्जाम्पल साइंटिफिक पर्पस के लिए यू आर डूइंग, और साइंटिफिक पर्पस के लिए क्वेश्चन जैसे पूछा वाई स्काई इज ब्लू, तो आपका आंसर टेक्निकल है जिसमें ऑल द पॉइंट्स मेंशन्ड है। ये दिस काइंड ऑफ डेटा यू हैव गिवन टू मॉडल। तो मॉडल अब ऐसा डेटा लेकर समझ रहा है कि इफ आई हैव बीन आस्क्ड सच काइंड ऑफ क्वेश्चन, दिस इज द आंसर, दिस काइंड ऑफ आंसर आई नीड टू गिव, मोर टेक्निकल। ये हमने उसको समझाया मॉडल को। ओके, एंड होता यही है, आपके जितने भी एलएलएम्स हैं उनकी फाइन ट्यूनिंग कुछ इस प्रकार से हुई है। और क्वेश्चन आंसर के अलावा अपनी फाइन ट्यूनिंग में उन्होंने ज़बरदस्त जो एक डेटा बना के रखा है, पेयरिंग ऐसी करी है उन्होंने। कोड भी हो सकता है, और आप जानते ही हो कोडिंग के लिए तो यूज़ हो ही रहा है। तो उन्होंने यहाँ पर मेंशन करा क्वेश्चन, उसका पूरा एंटायर कोड यहाँ पर मेंशन कर दिया। ओके, मॉडल समझ रहा है कि अच्छा ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ऐसा कोड बना के देना है। अच्छा, ऐसा नहीं कि उसको कोड की इंफॉर्मेशन मॉडल ऑलरेडी है, वो तो पूरे डेटा, पूरे इंटरनेट का डेटा उसके अंदर ठूस दिया था अपन ने। पूरा इंटरनेट का डेटा चुराया, डाउनलोड करा और वो एलएलएम को दे दिया गिवन। ठीक है। और लेने के बाद, डेटा लेने के बाद उसको भी अनऑर्गेनाइज्ड है वो डेटा, दे तो दिया आपने उसको, अनऑर्गेनाइज्ड है। फिर फाइन ट्यूनिंग से उसको सिखाया कि रिप्लाई करना कैसे है। ओके, ठीक है, ये उसको सिखाया गया। आर्किटेक्चर एक बार पकड़ में आ गया आपका एनकोडर डिकोडर वाला, क्योंकि वहां ही हमने देखा कि इनपुट देते हैं, आउटपुट मिल रहा है।
ओके, वी गिव एन इनपुट, वी गिव एन आउटपुट, गेट एन आउटपुट। तो ये आर्किटेक्चर पकड़ में आया। फिर उन्होंने सोचा कि एक काम करो, इनपुट में एंटायर एंटायर इंटरनेट का डेटा दे दो, किसी से बताओ मत, किसी को पूछो मत, चुपचाप से उड़ा लो डेटा। दैट्स व्हाट दीज पीपल डिड। ओपन एआई वालों ने ये काम करा, चुपचाप गूगल से ही पूरा डेटा उड़ाया, इधर उधर से पूरा डेटा उड़ाया इंटरनेट का, उठा के दे दिया इस आर्किटेक्चर में, ट्रांसफॉर्मर में। और हो गया, मॉडल ट्रेन हुआ। लेकिन उसको फिर फाइन ट्यून करा इन्होंने कि रिप्लाई कैसे करना, हाउ शुड दिस मॉडल गिव एन आंसर। तो फाइन ट्यूनिंग की प्रोसेस ही आप समझ रहे हैं। ठीक है, फाइन। तो अब फाइन ट्यूनिंग के अकॉर्डिंग आंसर देखो कैसा मिल रहा है। द स्काई अपियर्स ब्लू बिकॉज ऑफ द फिनोमिना ऑफ रिले स्कैटरिंग एज सनलाइट इंटर्स अर्थ। तो ये पूरा की पूरा आंसर वो बना के दे रहा है, वो टेक्निकली आंसर दे रहा है। ठीक है। सो मेथड्स ऑफ फाइन ट्यूनिंग में आपने देख लिया, सुपरवाइज्ड तो कर ही रहे, सुपरवाइज्ड लर्निंग प्रोसेस है वो। आपके पास क्वेश्चन है, आंसर है, आपको ये चीज मॉडल को समझानी है कि देख बेटा, ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, तो उसका आंसर ऐसा देने का। ठीक है, ये आपको समझानी है। तो यू आर टेकिंग लेबल्ड डेटा फॉर इट। तो instruction fine tuning, that means one of the strategy is to improve the model performance on various instruction fine tuning. That means about training the machine learning model using examples that demonstrate how the model should respond to query. The data set which we are using for the fine tuning has to serve the purpose of your instruction. सपोज एग्जाम्पल देखिए, इंस्ट्रक्शन में क्या कह रहा है वो। सपोज यू फाइन ट्यून योर मॉडल टू improve समराइजेशन। तो भाई ये सब कई प्रकार के आपको आपने बोला कि समरी बना के दे, तो डेटा भी उस तरीके का ले लो। ओके, डेटा भी ले लो आप उस तरीके का। यहां पर ऑन दिस साइड यू विल बी हैविंग ह्यूज अमाउंट ऑफ टेक्स्ट, और उसकी समरी आपने यहां पर मेंशन करी। तो को मॉडल विल लर्न कि यदि मेरे पास इस तरीके का ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा आता है, टेक्स्ट आता है, पूरा की पूरा कंटेंट आता है, हाउ शुड आई मेक अ समरी ऑफ इट। आपको सिखाना है उसको, मॉडल को। ठीक है, तो आप यहां पर समरी, इट हैज बीन टोल्ड अबाउट द समरी। मैंने आपसे कोडिंग की बात भी कर ली, क्वेश्चन आंसरिंग की बात भी कर ली, मैंने आपसे टेक्स्ट क्लासिफिकेशन की बात भी कर ली। तो ये सब सुपरवाइज्ड की कैटेगरी में आएंगे। अब वो सुपरवाइज में तुम इंस्ट्रक्शन दे के काम कर लो, तो ये इंस्ट्रक्शन दिया आपने। क्वेश्चन आंसर में भी कुछ इसी तरीके से ही है कि ये क्वेश्चन है तो ये आंसर है। टेक्स्ट क्लासिफिकेशन में सच इंस्ट्रक्शन तो नहीं है, इट्स लाइक सिंपल, आपके पास टेक्स्ट है और उसका लेबल है। ठीक है। तो उन्होंने कहा वी कैन फाइन ट्यून अवर मॉडल टू परफॉर्म समराइजेशन। In this case of translation, we should include the instructions like translate this text. तो आपको टेम्पलेट बनाना पड़ेगा, एक प्रॉम्प्ट का टेम्पलेट बनाना पड़ेगा आपको, प्रॉम्प्ट टेम्पलेट। वहां पर ये मेंशन करना पड़ेगा कि भाई ये टेम्पलेट है और इसमें आपको ट्रांसलेट करना है, टेक्स्ट को समरी बनानी है। तो फिर मॉडल समझेगा ओके क्या कहना चाह रहे हैं। तो ये आपकी इंस्ट्रक्शन बेस्ड हो गई। इन जनरल वी डू दिस थिंग ओनली, ये अपन करते हैं अपने लेवल पे, दैट्स व्हाट वी डू। अब भाई अगला तो फुल फाइन ट्यूनिंग की बात कर रहा। तो मैंने बोला था आपसे, फाइन ट्यूनिंग छोटे लेवल पे हो तो अपन दैट्स व्हाट वी आर डूइंग। फुल फाइन ट्यूनिंग का मतलब ये कि तुम तो पूरे ही मॉडल के वेट को अपडेट करने की बात कर रहे हो भाई, ये फुल फाइन ट्यूनिंग होती है। तो यदि आपसे बोले फाइन ट्यूनिंग, तो आप समझ जाना कि ओके, इट्स टॉकिंग अबाउट अ डाउनस्ट्रीम टास्क टू परफॉर्म, ये उसके बारे में बात कर रहा है। ओके, हाउएवर यदि वो बात करें फुल फाइन ट्यूनिंग की, तो अब आपको जो है पूरे वेट एडजस्ट करना है मॉडल के।
It is important to note that just like pre-training, full fine tuning requires enough memory. अभी बोला था ना कुछ देर पहले मैंने, आपके पास है क्या, मेमोरी है क्या, आपके पास बजट है क्या, आपके पास है तो कर लो, लगाओ जीपीयू और करो फुल फाइन। लेकिन आपका टास्क भी तो वैसा होना चाहिए, है आपके पास वैसा टास्क? आप क्या टास्क लेके बैठे हो? अभी आपको एक, फॉर एग्जांपल, हेल्थ केयर रिलेटेड, इफ यू आर हैविंग अ डेटा, होगी आपके पास 10,000 20,000 रोज होंगी। उसके लिए कोई पूरा फाइन ट्यूनिंग थोड़ी ना करना है, टेक्स्ट क्लासिफिकेशन नहीं करना। आपका टास्क वैसा हो तो सही कि फुल फाइन ट्यूनिंग कर लो आप, नहीं है तो फिर छोड़ो, ये रिसोर्सेस नहीं है आपके पास इतने। पैरामीटर एफिशिएंट फाइन ट्यूनिंग, पीईएफटी, इसकी बात मैं कर रहा था प्रीवियस क्लास के अंदर। पीईएफटी लामा के अंदर। तो ट्रेनिंग अ लार्ज लैंग्वेज मॉडल इज कंप्यूटेशनली इंटेंसिव, ये बात तो है। भाई छोटा मोटा मॉडल तो नहीं है, भाई वो पूरा डेटा खा गया इंटरनेट का। अब जो इतना खा जाए तो भाई वो ऑब्वियस सी बात है, कमज़ोर तो नहीं होगा वो। और इतना आर्किटेक्चर हो, मतलब उसकी देखो, आर्किटेक्चर को मैं हमेशा ना बॉडी समझता हूँ, बॉडी। आ, आपका जो फूड है, फूड खाना, वो डेटा है। और खाना कौन खाता है, फूड कौन खाता है? भाई फूड तो बॉडी को चाहिए ना अपने काम करने के लिए, चलाने के लिए, करने के लिए, तो वो आपका आर्किटेक्चर खाता है। आर्किटेक्चर विल ईट द डेटा। जैसे वी ईट द फूड, हमें अपनी बॉडी को वर्क करने के लिए डेटा, फूड चाहिए, उसको डेटा चाहिए। तो ह्यूज अमाउंट ऑफ फूड ले लिया वो, तो उसका आर्किटेक्चर, तभी तो बोल रहे हैं इतने बिलियंस ऑफ पैरामीटर पर ट्रेंड है, तो आर्किटेक्चर भी तो वैसे ही बनाया है आपने। ठीक है। अब क्या हुआ काम आगे? हुआ ये कि एलएलएम तो ये कह रहा है कि भाई फुल ट्यूनिंग करना तो मेमोरी मैनेज करना टफ है। ओके। लेकिन फिर उन्होंने कहा बट ऑल्सो द पैरामीटर दैट आर नेसेसरी फॉर द ट्रेनिंग प्रोसेस, ये अभी अपन उतने ही पैरामीटर को वी कैन एडजस्ट, यदि उनके मॉडल वेट्स को अपन कर लें एडजस्ट तो बढ़िया बात हो जाएगी फिर। ठीक है। सो अलोकेटिंग मेमोरी फॉर ऑप्टिमाइजेशन स्टेट्स, ग्रेडियंट्स एंड फॉरवर्ड एस्टिमेशन ड्यूरिंग द ट्रेनिंग प्रोसेस इज अ चैलेंजिंग टास्क। देखिए भैया, मॉडल ट्रेनिंग, डीप लर्निंग, न्यूरल नेटवर्क, ग्रेडियंट कैलकुलेशन, यार यही तो खेल है खास। ये इतना आसान नहीं है। मशीन लर्निंग में इतना अपने को लफड़ा नहीं था। मशीन लर्निंग आपके स्पेसिफिक जो है वो इक्वेशंस थी, उन्हीं पे काम कर रहे थे। यहाँ जब नेटवर्क बना, अच्छा, नेटवर्क बना, हमें अच्छा लगता है, क्योंकि जब हम न्यूरल नेटवर्क देखें तो आप बोलोगे सर कि ठीक है, ऐसा ये लेयर्स हैं, ये न्यूरॉन्स हैं उन पे, और पता ही है कि एक न्यूरॉन पे क्या काम होता है। आप देते हो इनपुट, आप लेते हो आउटपुट, और वेट होता है, बायस इज देयर, सो वाई इक्वल टू डब्ल्यू एक्स प्लस बी। ये मैथ्स होती है उस पर। और कोई मैथ्स मुझे हो तो बता दो। इसी मैथ्स के चक्कर में तो वो भाई नोबेल प्राइज जीत गया। ठीक है। क्या नाम है उनका, जॉफरी। क्यों? क्योंकि उन्होंने समझा, किसको समझा उन्होंने? उन्होंने ब्रेन जो है वहाँ उसका न्यूरल नेटवर्क समझा उन्होंने कि यार ब्रेन कैसे काम कर रहा है। तो अब आप भी तो मशीन लर्निंग करवा रहे हो ना, तो ब्रेन भी तो लर्न करता है, काम करो यार, तुम भी न्यूरॉन लो। और क्योंकि ब्रेन का तो डेंसली कनेक्टेड है, उसने बोला यार यदि ऐसा कुछ करेंगे तो डेंसली कनेक्टेड, हाँ ऐसा कर लो आप, इतने न्यूरॉन, इतने न्यूरॉन, इतने लेयर पे ऑर्गेनाइज कर दो बस। बाद में पूरी डीप लर्निंग छा गई। और फिजिक्स का फिजिक्स का वो क्या बोलते हैं उसे, नोबेल प्राइज एआई के कॉन्सेप्ट पे जीत गए। सही बात है। ठीक है।
अब एआई इज एप्लीकेबल एवरीवेयर, तो आप ये ना बोलें कि सर न्यूरल नेटवर्क बना के फिजिक्स का नोबेल प्राइज जीत गए। अब भाई जीतने को तो केमिस्ट्री और मैथ्स का भी जीत जाएंगे। और खैर मैथ्स तो वैलिड बनती है यहाँ, और फिजिक्स के अंदर भी मैथ्स आती है, तो भाई हम डिनाई नहीं करेंगे। ठीक। तो व्हाट्स हैपनिंग हियर इज, ने कहा कि कुछ एफिशिएंसी आप लेकर आइए, पैरामीटर एफिशिएंसी। इतना बड़ा मॉडल, इतने सारे पैरामीटर, सब परेशान हो जाएंगे। हम नहीं होंगे, हम देख के ही परेशान हो जाएंगे। कैसे? व्हेन you put your data for the training purpose and if you're not available with that much amount of memory and the processing unit, तो तुम परेशान हो जाओगे फिर। यदि अवेलेबल है तो फिर वेट करना पड़ेगा, इंतज़ार करना पड़ेगा। क्योंकि ये तो 2 to 3 डेज के अंदर फिर ट्रेनिंग होती है। 2 3 2 डेज, 3 डेज, 7 डेज भी लग सकते हैं ट्रेनिंग पे, छोड़ दो आप रिसोर्सेस लगा के पूरा। तो उन्होंने कहा कि भाई पीएफटी का यूज करें, मेथड्स दैट कैन ओनली अपडेट स्मॉल सेट ऑफ पैरामीटर। वही मैं जब से क्या चिल्ला रहा था, आउटर लेयर पे कुछ पैरामीटर हैं, उनको सल्टा दो यार, उन्हीं को ट्रेन मार दो, काहे के लिए इतना टेंशन ले रहे हो तुम। ठीक है, तो स्मॉल सेट ऑफ पैरामीटर, स्मॉल सेट ऑफ वेट एंड द बायस। कुछ न्यूरॉन को पकड़ लो, बोलो कि देखो भाई पूरे दिमाग को डिस्टर्ब नहीं करने का, मेरे को तुमसे कुछ बात कहनी है, कुछ काम तुमसे करवाना है। तो मैं तुम्हारे इतने बड़े दिमाग में, दिखता छोटा है लेकिन काम बहुत बड़े बड़े जो है उसी से ही होते हैं। अच्छा भी वही करवा देगा, बुरा भी वही करवा देगा तुमसे। तो आप छोटे सा, आप थोड़े से न्यूरॉन दे दो, मेरे को समझाना है आपको कुछ बात। अब आपके ब्रेन में भी तो मेरे क्लास के अलावा बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन मैं भी तो आपकी फाइन ट्यूनिंग ही कर रहा हूँ, और क्या कर रहा हूँ। कहीं कुछ कुछ बातें बता के आपके, देर आर सर्टेन, बाकी आपके दिमाग में मेरा मैनी थिंग्स विच आर हैपनिंग हो रही। तो हम भी पैरामीटर एफिशिएंट ही कर रहे हैं, मतलब कुछ आपके न्यूरॉन्स को मैं अपडेट करना चाह रहा हूँ, वेट को, कि ये बात सीख लो। ठीक है। तो यहाँ कहा गया, ट्रांसफर लर्निंग टेक्निक चूजेस स्पेसिफिक मॉडल कंपोनेंट्स एंड फ्रीजेस द रेस्ट ऑफ द पैरामीटर। The result is logically having a much smaller number of parameters in the original model, in some cases 50 to 20%. LORA, low rank adaptation, इसका फुल फॉर्म होता है LORA का, कैन रिड्यूस द नंबर ऑफ ट्रेनेबल पैरामीटर्स बाय 10,000 टाइम्स। तो ये ना थोड़ा सा ये बता रहा है कि हमने एक चीज और पढ़ी है। प्री ट्रेन मॉडल को यूज करते थे अपन, दैट इज कॉल्ड एस ट्रांसफर लर्निंग। ट्रांसफर लर्निंग ये कहते थे अपन। जैसे कि कंप्यूटर विजन के अंदर ट्रांसफर लर्निंग बहुत यूज होती है, मैं आज अपने प्रोजेक्ट में बताऊंगा, कर रहा हूँ। तो ये जो ट्रांसफर लर्निंग ना, ये भी प्री ट्रेन्ड मॉडल्स होते हैं। प्री ट्रेन मॉडल्स, फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर विजन की बात करूँ मैं, तो देर आर मेनी प्री ट्रेन मॉडल्स, VGG 16 19 इंसेप्शन वगैरह वगैरह, जो कि इमेज नेट का जो डेटा होता है, इमेज नेट डेटा, इस पर वो पढ़े लिखे होते हैं। अरे अपना LLM भी पढ़ा लिखा है भाई, वो टेक्स्ट के डेटा पे पढ़ा लिखा है, वो भी प्री ट्रेंड ही तो है। तो ये कंप्यूटर विजन के जो मॉडल्स होते हैं वो भी प्री ट्रेंड होते हैं, ये LLM भी अपना प्री ट्रेंड है, पढ़ा लिखा है। अब अपन इस पढ़े लिखे से कह रहे हैं कि भाई देख, सुन। अच्छा, पहले ट्रांसफर लर्निंग की बात करूं। ट्रांसफर लर्निंग में क्या होता है कि जो अपना पढ़ा लिखा मॉडल है, प्री ट्रेंड है, उसके वेट ले लेते हैं अपन, यानी उसके जो ट्रेंड वेट्स हैं, जो वैल्यूज हैं, वी डू टेक, और आगे कुछ लेयर ठोक देते हैं। जैसे कि डेंस लेयर 2 4 लगा दूंगा मैं, करने वाला हूँ। डेंस लेयर लगा दिया, ग्लोबल एवरेज पूलिंग लगा दिया, स्पेशल डायमेंशन रिड्यूस करने के लिए ये लगा दिया। और ये जो वेट इससे लिए ना, ये न्यूरॉन को यहाँ जो न्यू लेयर्स आपने ऐड करी है उनको दे दिए। बोले कि तुम, ये भाई जो है ये इमेज की अच्छी जानकारी रखता है, तो तुम इससे इसकी जानकारी ले लो, और अपने डेटा से, विद रिगार्ड्स टू योर डेटा, उससे इन वेटों को एडजस्ट कर लो। बस इन्हीं को करना है ना, उसको मत करना, इसको छेड़ना मत। यहां हम इसको कर देते हैं फ्रीज, इसका कुछ नहीं बिगड़ता है ना। अब जो कुछ इससे तो अपन ने अपनी जानकारी ले ली, अब जो कुछ करना है इधर ही करना है।
और ये कोई ज़्यादा बड़ा टास्क नहीं होगा, कुछ लेयर हैं, कुछ न्यूरॉन है, ये कम समय के अंदर खेल खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये होती है ट्रांसफर लर्निंग, क्योंकि भाई मैंने ट्रांसफर कर दिया। फाइन ट्यूनिंग में मैं अलग से कोई लेयर नहीं जोड़ रहा हूं भाई अपने प्री ट्रेन्ड मॉडल में। आई एम नॉट एडिंग एनी लेयर एडिशनल, कि भाई मेरा एलएलएम है, चैट जीपीटी है, और जीपीटी में मैंने अपनी तरफ से 3 लेयर और जोड़ दी। ये काम नहीं कर रहा मैं। मेरे पास जीपीटी है, कोई दिक्कत नहीं है, होने दो। अब जीपीटी की ही, मान लो जीपीटी में तुम्हारे पास 8 लेयर्स हैं, मैं बोल रहा हूँ भाई तू एक काम कर, 6 लेयर को तो मैं बिल्कुल नहीं छेड़ूंगा, ये जो 2 लेयर है तेरे पास, इन्हीं को मैं बदलाव चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू डू अ चेंज इन दीज 2 लेयर, जो भी इस पे न्यूरॉन्स है मैं उसमें चेंज चाहता हूँ। इसी को ही मैं पीईएफटी बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, पैरामीटर एफिशिएंट फाइन ट्यूनिंग। ताकि भाई तेरे पास कम पैरामीटर हैं इन लेयर पे, इन्हीं को मैं एडजस्ट कर देता हूँ अपने डेटा से, अपने डेटा से एडजस्ट कर देता हूँ इन्हीं को। नेक्स्ट टाइम मैं आपको जो डेटा दूंगा, तो आपको जो कलाकारी करना है वो कर देना, लेकिन जैसे ही वो इन पे आएगी, इन लेयर पे, तो मेरी बात बन जाएगी और मेरे को रिजल्ट मिल जाएगा। क्योंकि ये आउटपुट लेयर्स है, आउटपुट लेयर को ही मैंने फाइन ट्यून करा, तो आउटपुट लेयर इज गोइंग टू गिव मी द रिजल्ट, तो उन्हीं से मैं ले लूंगा, उन्हीं को बदलाव करके, दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू डू, ये मैं कर लूंगा। यहाँ पर यही समझाया है। ठीक है, हियर वो ये बता रहा है कि 10,000 टाइम्स आपने कम कर दिया लोड। ठीक है, सो वी आर नॉट टचिंग द ओरिजिनल एलएलएम, भाई बिल्कुल नहीं। जो खास काम है उसको तो टच ही नहीं करा आपने। फुल फाइन ट्यूनिंग तो भाई अभी आपके बस की नहीं है, छोड़ो। हम क्या कर रहे हैं, जस्ट इतना एक्सपेंसिव पे जा नहीं रहे हैं, फ्यू लेयर्स को पकड़ रहे हैं, उसकी फाइन ट्यूनिंग कर देंगे, ये काम कर रहे हैं। ठीक है, आगे और भी चर्चा होगी मेरी आपसे इसको लेकर, रैक्स के बारे में बताऊंगा थोड़ा बहुत, क्या अंतर है और क्या नहीं है। ओके, सो टुमारो विल जस्ट क्लोज द चैप्टर ऑफ फाइन ट्यूनिंग ऑल्सो। ओके, आपको ठीक लगा आज का सेशन? लेट मी स्टॉप प्रेजेंटिंग। यू अंडरस्टूड